नंबर वन, इस क्वेश्चन में हमें when we have the problems of semiconductors or numericals of semiconductor, then the first type of question is if we have given number density of intrinsic or pure semiconductor as 4 into 10 raised to power 8 per meter cube with doping, whole density becomes 2 into 10 raised to power 10 per meter cube. Question 1 है find new electron density, and question 2 is what will be nature of new element. इंट्रिंसिक की दे रखी है हमारे को नंबर डेंसिटी, डॉपिंग के बाद में होल डेंसिटी ये हो जाती है, तो नई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी और व्हाट विल बी नेचर ऑफ न्यू एलिमेंट. देखिए इसके लिए हमारे को सबसे पहले फॉर्मूला ये यूज करना है, Ne into NH is Ni square. So new electron density must be equals to Ni square upon NH. Ni is 4 into 10 raised to power 8. NH is 2 into 10 raised to power 10. इसके साथ चला गया. This becomes 8 into 10 raised to power 16 upon 10 raised to power 10. So this becomes 8 into 10 raised to power 6 per meter cube. ये है नई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब ये है होल डेंसिटी, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. Clearly as whole density is more than electron density, so semiconductor is p type. The new semiconductor will be p type semiconductor. This is the first kind of questions कि हम डॉपिंग की वजह से कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी चेंज होगी. So this is how the electron and hole density will change. See question number 2 now. Identify which diode is forward biased and which one is रिवर्स बायस्ड. कुछ डायोड्स गिवन होंगे, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है. ये फर्स्ट एग्जांपल है. जैसे इस तरफ P होता है, इस तरफ N. इफ पोटेंशियल ऑफ P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ N तो होता है फॉरवर्ड बायस, और if potential of P is less than potential of N तो होता है reverse biased. Like this, plus 2 volt and 0 volt. Now 2 is greater than 0, so this diode is forward biased. Minus 4, minus 2 volt. Now minus 4 is less than minus 2, so this must be reverse biased. जब भी इस तरह से हो इसका मतलब ये है 0 volt ground, and clearly 0 is less than 2, so again it is reverse biased. So you need to identify that which diode is forward and which is reverse. You can easily go through it and you can find out. Question number 3.
ideal diode. If any diode is ideal diode, when it is forward bias, it has zero resistance. When it is reverse bias, it must have infinite resistance. It will conduct when it is forward biased, it will not conduct when it is reverse biased. See the example of this, that if you have this diode, both are ideal diode, this will be 5 ohm resistance, this will be 10 ohm resistance, this is 10 volt battery. Question is, find reading of emitter. अब देखिए डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है लेकिन D2 रिवर्स बायस है. So as D1 is forward biased, current will flow only through this, and current must be equals to potential upon resistance. So 2 ampere of current will flow through this configuration. No current will flow when it is reverse biased. Question number 4. If the diode is not ideal diode, each diode is having 2 ohm resistance, but connected in this manner with this 10 volt battery. Both of these diodes are forward biased. Here it is forward, but this will be reverse. So current will flow only due to this, and in this sense total resistance must be equals to 4 ohm. Potential is 10 volt. This should be 10 by 4, so this must be 2.5 ampere of current will flow. Question number 5. We have given one resistance, one diode connected with a supply. Supply is of 1.5 volt. This value is R. The potential drop of this will be 0.5 volt. The maximum current which can flow to 0.5 volt diode is 5 milliampere. Question is, find R.
Now this will be looks like a Ohm's law concept, Kirchhoff law type of thing. This must be V1, this must be V2. So total potential should be equals to V1 plus V2. 1.5 V1, V2 is 0.5. So V1 becomes 1 volt. This must be equals to I into R. अब जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है इस डायोड से वो है 5 मिली एम्पियर. तो वही 5 मिली एम्पियर इससे भी फ्लो होगी क्योंकि दोनों वही सीरीज में. So what will be R? R should be equals to 1 upon 5 into 10 raised to power minus 3. That should be 1000 upon 5, so it should be 200 ohm. So the value of resistance to be connected, it should be equals to 200 ohm. अगर 200 ohm का resistance नहीं लगाया तो वो जल जाएगा. So it should be 200 ohm. Resistance must be there with it. Problem number 6 is when the diode is forward biased, let the graph looks like this. This it is voltage. Here it is current in milliampere. We have given like this. This way, values are given. Question is, find first static resistance, second dynamic resistance. अब स्टैटिक रेजिस्टेंस के लिए इस लीनियर रीजन का कोई भी आपने कॉम्बिनेशन ले लिया. सो आर स्टैटिक should be 6 volt upon 3 milliampere. That becomes 2000 ohm. लेकिन अगर आपको R डायनेमिक लेना है, आपको चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट लेना पड़ेगा. इसके लिए आपको ये ट्रायंगल तैयार करना पड़ेगा, जो ट्रायंगल आपने इस तरह से ले रखा है. चेंज इन वोल्टेज 7 minus 4. Change in current in this 5 minus 1. ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 4 into 10 raised to power 3. This becomes 750 ohm of dynamic resistance is there. So static resistance depend करता है linear रीजन के किसी भी configuration पे, पर dynamic change को show करता है. So यहाँ पे static and dynamic two reasons are there. Seventh problem is this is for photodiode having energy gap equals to 2 electron volt. Will it conduct for photon
of 3000 एंगस्ट्रम। इस क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि ये फोटो डायोड है, अगर एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की होगी तो ही ये कंडक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आपके पास में फोटोन है 3000 एंगस्ट्रम का। सबसे पहले इस फोटोन की एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इज h nu, that is hc by lambda। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम दे रखे हैं तो hc के वैल्यू को आप 12400 लगाओ और लैम्बडा को इसके साथ में रख दो। ये लगभग आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ गया। क्योंकि ये एनर्जी गैप से ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट विल कंडक्ट। अगर इससे कम होती तो इट विल नॉट कंडक्ट, बट इससे ज्यादा है सो इट विल कंडक्ट। एट्थ प्रॉब्लम इज this is for rectifier। Input has frequency 50 Hertz. When it will half wave rectify and when it will full wave rectify, what will be frequency? याद रखिएगा, इनपुट की अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट में भी 50 हर्ट्ज ही होगी, और इनपुट में 50 है तो आउटपुट के अंदर यहां पर 100 हर्ट्ज हो जाएगी। So for rectifier, if input frequency is 50 Hz, half wave में it will remain 50, but full wave में it will be 100। याद रखिएगा 50 का 25 नहीं होता है, it will be 50 Hz। Next one is ninth problem is if barrier potential, जो आप यूज करते हैं जब भी अपन पीएन जंक्शन को इक्वेट करते हैं, तो इफ इट इज गिवन दैट इफ द बैरियर पोटेंशियल ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट and depletion region is 1 micrometer, then find electric field। अब बैरियर पोटेंशियल अपॉन डिप्लीशन रीजन को साथ में कर दें आप, तो आपके पास में आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली V अपॉन R। V की वैल्यू है 0.5 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶, 5 into 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा फॉर दिस बैरियर पोटेंशियल एंड दिस डिप्लीशन रीजन। And the last question, number 10th, is वन वोल्ट के डायोड्स को इस तरह से लगाया गया है। सब 1 ओम के हैं। with 10 volt supply,
Now this diode and this diode are in forward biased, but this one and this one again in reverse bias. So the same concept is there in this also. Only these two will conduct. So the reading of emitter should be equals to 10 upon 2. It should be 5 ampere only.